Good afternoon, students. Today I am teaching you invitation writing, formal and informal. A formal invitation, main characteristic of formal invitation. A formal invitation is normally a single sentence presentation in third person. देखिए इसकी स्पेशलिटी होती है कि इसका पर्सन जो है हमेशा थर्ड पर्सन ही यूज होता है, इसी दे ही यूज होता है और इसमें फर्स्ट और सेकंड पर्सन यूज नहीं होता. फॉर्मल इन्विटेशंस आर जनरली प्रिंटेड इन्विटेशन कार्ड्स. फॉर्मल इन्विटेशन जो है जनरली प्रिंटेड होते हैं इन्विटेशन कार्ड्स पर. वी यूज देम टू इनवाइट गेस्ट on some auspicious occasion like birthdays, weddings, inauguration of shops, houses. इन सबके टाइम पर आपको एक कार्ड भेजना होता है, इनविटेशन कार्ड. वो फॉर्मल इनविटेशन के अंदर आता है. The invitations answers the questions who, whom, when, where, what, time and for what. That is then the occasion. सबसे पहले occasion का name of the invitee, जिनको invite कर रहे हैं उनका नाम, name of the host, host का नाम, उसके बाद date, time and venue लिखा जाता है. Number 4, the other details include name, designation and address of the organizer, a sponsor or host, or the names of the chief guest or special invitees. इनके names आते हैं. In the case of an official invitation, कब? जब official invitation हो. Next thing, printed formal invitations don't include the name of the address. यानी कि printed formal invitation जो है don't include the name of the address. Address का पूरा address का नाम उसमें नहीं होता. Invitation to VIP to preside over a function to carry the name of VIP permanently. So these points should be noted by you students. And now I am telling you printed formal invitation किस तरह से किया जाएगा, किस तरह से लिखेंगे आप. See it. Mrs. Syam Lai and Sons are opening a new general store, Galaxy Novelties, in Gitanjali Enclave. Okay, Dwarika, Delhi. The inauguration ceremony is fixed for Sunday, the 19th October 2021 at 11 a.m. Prepare a draft of formal invitation letter for the purpose. अब इसमें सबसे पहले जिनका है होस्ट का Mrs. Syamlal and Sons announce the opening of the Galaxy Novelties. इन्होंने इन्फॉर्म किया क्या ओपन करने जा रहे हैं. जनरल स्टोर इन गीतांजलि एनक्लेव. अब यहाँ पर प्लेस का वेन्यू यानी वेन्यू का नाम है द्वारिका, दिल्ली. इनॉग्रेशन, व्हाट इज स्पेशल हियर? दिस वन इज इनॉग्रेशन. ओके, सो इनॉग्रेशन हियर इज इन बोल्ड लेटर ऑन Sunday the 19th of October 2021 at 11 a.m. Okay, this should be the way to write down formal invitation. All are cordially invited, visited for all kinds of grocery and domestic items. A inauguration discount of 10% on all goods. यानी इनॉग्रेशन है इस कारण से 10% गुड्स पर उन्होंने डिस्काउंट दिया है. RSVP, गैलेक्सी नोवेलिटीज, फोन नंबर. ओके, सो दैट इज द फॉर्मेट. किसका है ये आपका? ये फॉर्मेट है फॉर्मल फॉर्मेट इनॉग्रेशन सेरेमनी. ओके, देन
Next, you are a student of Newton Public School, Nagpur. The school is holding its annual function on Saturday, the 15th November 2021 at 11 a.m. The HRD Minister, Dr. M.M. Joshi, has consented to be the chief guest. Okay, design an invitation card to be sent to the parents and other invitees. Do not exceed 50 words. ये RBSC का फॉर्मेट है आपका. The principal, staff and the students, first of all we will host, so that is why we will write, and the Newton Public School, Nagpur. Solicit the pleasure of your company on the auspicious occasion of the annual function of their school at 11 a.m. on Saturday, the 15th November 2021. Dr. M.M. Joshi, HRD Minister, Government of India, will be the chief guest and give away the prizes out to the students. RSVP, Principal, Newton Public School, Nagpur. Phone number. Okay, so this one is the format of formal invitation, the annual function. अब है informal invitation. Main characteristics of informal invitations. Informal invitations follow the pattern of ordinary personal letters. Informal invitations जो है वो pattern follow करते हैं personal letters का. These letters are written to relatives, friends and acquaintances. परिचितों के लिए, relatives रिश्तेदारों के लिए, friends के लिए. These letters are first second person presentation. इसमें first second person का presentation होता है, जबकि उसमें केवल third person का. Personal feelings and emotions find an expression. Personal feelings और emotions जो है वो उनमें वो एक expression पाते हैं. कैसे? The writer's address is given the usual place. अभी हम आपको बताएंगे. एक usual है, सामान्य से place पर use किया जाता है address. The salutation is usually dear plus name. Okay, and the date of writing is given, but the year is generally omitted. देखिए डेट लिखा होता है, ईयर omitted कर दिया जाता है, बट अगर आप सही लिख लेंगे तो भी रॉन्ग नहीं होगा. The style and tone are relaxed and informal. The different tenses are used as the sense demands. The complimentary clause to sincerely. Okay, then these are the main points, main characteristics of informal invitation. So you may write in your copy. Question number 1. Rohit has got success in CBSE PMT. He wants to celebrate his admission to Shivaji Medical College, Nagpur by throwing a party to his friends. Write an informal invitation giving details of venue, time and date. Do not exceed 50 words. Answer. 33 427 प्रिया बिहार एड्रेस लिखा हुआ है. उसके बाद न्यू दिल्ली वही एड्रेस है. 15 जुलाई डेट 2021 भी लिख सकते हैं. डियर वरुण, क्या लिखा है उसका फ्रेंड को? यू विल बी ग्लैड टू लर्न दैट आई हैव सिक्योर्ड 80th रैंक इन द CBSE PMT एक कंपटीशन में उसने 18th रैंक पाई है. आई हैव गॉट एडमिशन इन अ prestigious institution, Shivaji College, Nagpur. I want to share a few happy moments of life in the company of my old mans at a dinner in the Hotel Kanishka at 9 p.m. on 23 July 2021. Please join the celebration and merry making. Yours sincerely, Rohit. So this one is the informal invitation. Okay, and you may write in this manner. यहाँ पर सेल्फ एड्रेस, उसके बाद डेट, उसके बाद सैल्यूटेशन, जिसका नाम है उसका नाम लिखकर, डियर लिखकर, और उसके बाद ये फॉर्मेट आप यूज कर सकते हैं. इसमें आपने देखा कि सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का यूज किया गया है, और जबकि हम फॉर्मल वाले में थर्ड पर्सन ही यूज करते हैं. ओके, देन राइटिंग रिप्लाईज. रिप्लाईज कैसे लिखते हैं? ऑलमोस्ट
आपके एग्जामिनेशन में ये आपको मिलता है राइटिंग रिप्लाईज। सीबीएसई और आरबीएसई के एग्जाम्स में ऑलमोस्ट आपका ये मिल जाता है आपको एग्जाम के अंदर। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ किस तरह से आपको करना है। राइटिंग रिप्लाईज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल और रिस्पॉन्डिंग टू इन्विटेशंस कैसे लिखेंगे। अ फॉर्मल रिप्लाई इज यूजुअली वेरी शॉर्ट, बहुत छोटा होता है। इट इज ब्रीफ एंड टू द पॉइंट होता है एकदम। एंड द क्वालिटी ऑफ अ गुड रिप्लाई इज दैट इट मस्ट ऑलवेज बी प्लीजेंट होना चाहिए ये। इवन while declining the invitation or expressing inability to attend, one must be polite and courteous. Okay, polite और courteous होना चाहिए, शालीनता से लिखा हुआ होना चाहिए। Formal replies demand a formal tone. Formal replies जो है वो एक formal tone demand करता है and treatment, and there is no room for unnecessary details or surpluses matter in them. superfluous matter in them। देखिए स्पेशली डिटेल्स जो है अननेसेसरी डिटेल्स नहीं डाली जाती हैं। superfluous मैटर इज इन दैम, और मतलब इनके अंदर केवल अपनी जो मेन बात होती है उसको लिखा जाता है, और जो सुपरफ्लुअस मैटर होते हैं ना, वो फ्लुअस मैटर मतलब अपने स्पेशल बातें वो इसके अंदर नहीं आती। An informal reply or private letter may, however, express personal feelings or desires. Private letter में ही personal feelings लिखी जाती है। In an invitation, in an intimate style and informal tone. Tone जो है वो intimate style होता है और informal होता है। Main characteristics formal replies बहुत simple है ये। Acknowledge the invitation की knowledge, express thanks in the third person के रूप में दी जाती है। Specify the reasons for refusal and be brief and specific, be formal in tone and treatment. Okay? Do not exceed the word limit, usually 50 words. देखिए informal replies। Acknowledge informal के लिए क्या चीज है, वो formal के लिए था informal। Acknowledge the invitation in first person, use second person for the senders of invitation, mention acceptance, regret, specify the reason in the case of refusal, use warm and simple language, do not exceed the word limit, usually 50 words. Responding to invitation and formal replies, solve question I am presenting here. Question number 1, draft a formal reply accepting an invitation to be present on the occasion of wedding of Ankush, son of Mr. and Mrs. Sankar of 24 Green Park Road, Kanpur. You are Vikram God of Raja Ki Mandi, Agra. Okay. Mr. and Mrs. or Mrs. and Mr. may be right. Vikram God thanked Mr. and Mrs. Sankar for inviting them on the occasion of the wedding of their son Ankush at 24 Green Park. Address लिख दिया गया कानपुर on 15 May 2021, and assured them that they will be present on the occasion to wish the newlyweds a very happy married life. Mr. and उन्होंने शुभकामनाएं दी, और उसके बाद Mr. and Mrs. Gaur will reach Kanpur by the Agra mail which leaves Agra at 8 AM तक पहुंच जाएंगे। विक्रम गौर 5 AM। ओके, एक्सेप्टिंग, ये एक्सेप्टिंग है। अब नेक्स्ट write a formal reply expressing your inability, मतलब कि declining to attend the birthday celebration of your friend Suresh Pradhan of 1235 Vivekanand occasion of wedding Ankush, Mr. and Mrs. Question number 2, write a formal reply expressing your inability to attend the birthday celebration of your friend Suresh Pradhan of 1235 Vivekanand Marg, Bangalore. You are Somesh Basu. Mr. and Mrs. Somesh Basu wish to thank Mr. and Mrs. Suresh Pradhan for extending an invitation to the birthday celebration of their
son Akshay at their residence 12:35. Vivekanand Mark, Bangalore on 20th March 2021 and wish the young boy many happy returns of the day but regret their inability to be present personally on account of some previous engagement. Somesh Basu, 16 March 2021. Okay, so this one is declining or this one is accepting. Now, informal replies, solved questions. You are Akash. You have been invited to attend the wedding of your friend's sister during summer vacation. Respond to the invitation, regretting your inability to attend it. 2005, 205, Vasant Kunj, New Delhi, 4 March 2021. Dear Neha, thank you for your cordial invitation on the occasion of your sister's wedding. I, however, regret my inability to be with you on this happy occasion, as we shall be leaving for Shimla for summer holidays on 1 May 2021. Please excuse me absence. मुझे क्षमा करना, मैं नहीं आ सकती, एब्सेंस रहूंगी, मेरी एब्सेंट होगी. And do convey my regards and best wishes to the couple. Yours sincerely, Akash or Varsha. And accepting and declining invitation. You have received an invitation letter from the principal and staff of Government Senior Secondary School, Chaumala, which is going to celebrate its annual function on 6th February 2021 at 3 p.m. Dr. Samit Sharma will be the chief guest of the function. Write a formal reply to accepting the invitation. Mr. Pramendra Jain thanks the principal and the staff of Government Senior Secondary School, Chamala, for their kind invitation to attend the annual function of their school on 6th February 2021 at 3 p.m. He has great pleasure in accepting the invitation. So this is the accepting. Now you have been received an invitation from the Students Union of Government Senior Secondary School, Nagar, Bharatpur, to attend Teachers' Day celebration on 5th September 2021, 10 a.m. You are Mr. Amar Chaudhary, father of Shivam, a student of class 11th of this school. Write a formal reply to accepting the invitation. Mr. Chaudhary thanks the Students Union of Government Senior Secondary School, Nagar, for their kind invitation to attend Teachers' Day celebration on 5th September 2021 at 10 a.m. He has great pleasure in accepting the invitation. ये भी थर्ड पर्सन में लिखा गया है. Next, declining. You have received an invitation letter from principal and staff of Government Senior Secondary School, Alwar. You have to attend Career Day function on 15th February 2021 at 2 p.m. as a chief guest of the function. Write a refusal to the invitation. Owing to your being busy in an important meeting, refusal मतलब declining. Mr. Mohan Jalan thanks the principal and staff of Government Senior Secondary School, Alwar, for their kind invitation to attend Career Day function on 15th February 2021, but regrets not being able to attend it due to being busy in an important meeting. Sincere thanks for the invitation. Okay, तो इसमें आपने देखा सबसे पहले नेम, सेंडर्स नेम, उसके बाद जिनको दे रहे हैं उनका नाम आएगा, उसके बाद जगह का नाम और फिर थैंकफुल, इट मीन्स इन्विटेशन के लिए धन्यवाद. उसके बाद आप डेट लिखेंगे, फंक्शन का नाम, डेट, और डेट के बाद में आप रिग्रेट, अगर अनेबल है तो रिग्रेट, और अगर कैपेबल है तो आई एम एबल और आई एम हैप्पी टू एक्सेप्ट दिस इन्विटेशन, ओके, टू अटेंड ड्यू टू द बीइंग बिजी इन द इम्पोर्टेंट मीटिंग. इस तरह से उन्होंने नेग्लेक्ट किया है, रिग्रेट किया है कि मैं नहीं आ सकता, और इस तरह से उन्होंने थैंकफुल भी है. तो दैट इज द वे. आपको सारा कुछ मैंने बता दिया कि इस तरह से आपको लिखना है, और ये आपका इन्विटेशन का पार्ट कंप्लीट. अगर आपको कुछ समझना है तो आई विल टेल यू
next time. Thank you. Have a nice day.